हेलो, हाँ जी। देखो बेटा, अज आप स्टार्ट करने टॉपिक लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। मे बी तुसी सब ने पहला भी किया होना या नहीं भी किया, तो चलो लीनियर डिपेंडेंट का देखो हुण मतलब इत्थे की है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब दूसरे ते डिपेंड करना। सो अगर तुहानू x1 x2 xn वैक्टर्स आर गिवन, all are non-zero, they all should be non-zero, and if there exist scalars alpha 1 alpha 2 alpha n, not all zero। इस स्केलर्स जो सारे जीरो होने जरूरी नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक नॉन जीरो होवे, such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 so on up to alpha n xn is 0, then I say that x1 x2 xn are linearly dependent vector। आपस च डिपेंडेंट कदों होंगे? अगर स्केलर एग्जिस्ट करन जो सारे जीरो ना होन, सच दैट लीनियर कंबीनेशन अगर इक्वल टू जीरो है, दैन आप की कहांगे कि दीज वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड लीनियरली इंडिपेंडेंट किहड़े होणगे? इफ अल्फा 1 x1 plus alpha 2 x2 so on up to alpha n xn equal to 0। ये सिर्फ एक कंडीशन च होवे कि ये जिन्ने भी सारे स्केलर्स है दे ऑल शुड बी जीरो, दैन आप की कहांगे कि है लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब अगर लीनियर कंबीनेशन जीरो है तो सारे स्केलर जीरो होंगे। डिपेंडेंट का मतलब अगर लीनियर कंबीनेशन जीरो है तो सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, एटलीस्ट एक नॉन जीरो जरूर होएगा। ठीक है, नाउ वी आर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ any if we are given 3 or 4 vectors, suppose we are given that check whether these are linearly dependent or not linearly dependent, we will just start here. These are the 3 vectors given to us. We will just take alpha 1 into x1 plus alpha 2 into x2 plus alpha 3 into x3 equal to 0। now x1 the value fill, after filling the value of x2 and x3 we will compare the equation with right side। now right side should be 0 0 because comparison should be in the same terms। so after solving, if you get that alpha 1 alpha 2 or alpha 3 all are 0, then these are linearly independent। if any of them is non-zero, then the vectors are linearly dependent। now we are, it is very well given in your book, just read out the page and you will understand the whole concept। infinite set is always linearly independent if every subset is linear independent। next, consider the set x1 x1 x square xn so on up to in the vector space। now the now let linear combination of this is equal to 0, and comparing the, now 0 can be written as 0 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x raised to power n। so you will get all scalars 0, therefore S is finite linear independent subset of f and x, right? next, just to read out these examples whether these are linearly dependent or not। next, the theorem number 12, let Vf be a vector space, then any subset of linear independent set is linearly independent। that means if you are given that x1 x2 so on up to xn, this set is linearly independent, and if I have chosen any of the subset of this set, let it be m xm, where m is less than equal to m, now I have to prove that this set is also linearly independent। ठीक है, for that we will take let alpha 1 into first vector, alpha 2 into second vector, so on up to alpha m into x raised to power xm 0। so I have just taken the linear combination of these vectors। now also we know that x1 alpha 1 x1 alpha 2 x2, it also can be written as this, plus 0 into xm plus 1 plus so on up to 0 into xn, we can write it as this। okay, now
we are given that x1, x2, xn are linearly independent. Therefore alpha 1, alpha 2 so on up to alpha m बाकी तो सारे है ही है ज़ीरो। और असी की है लीनियर कंबीनेशन इक्वल टू ज़ीरो लेता सी, सारे स्केलर ज़ीरो आ गए, दैट मीन्स दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। So if we are given a superset is linearly independent, the subset is also linearly independent. ठीक है, just read out this case. We have considered the case when S is a finite set. Second case is when S is infinite set. Whether S is infinite, let's take T be the finite subset of S. Then this is a subset of S, that implies x1, x2, xm is linearly independent. Thus every finite subset of T is linearly independent over F. Second case, second है any superset ऑफ अ लीनियर डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर छोटा ही डिपेंडेंट है तो उस तो बड़े वाला तो ऑलरेडी डिपेंडेंट ही होएगा, क्योंकि अगर मैं लेके चल दिया मन के चलो ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट है और उस तो जो बड़ा सैट है टी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट हुने तो मैं क्या है कि सबसेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तब एस फॉर बीइंग अ सबसेट ऑफ टी इट शुड बी लीनियर इंडिपेंडेंट, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर टी इज लीनियरली dependent. Next is every singleton set is linearly dependent if it has a zero vector. हुन singleton set देखो केड़ा हुंदा है जिंदे विच सिंगल एलिमेंट हुंदा है, एक एलिमेंट हुंदा है। हुन देखो मन के चलदे आ दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। इफ दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट मीन्स द लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो for alpha not equal to 0, because we have already said that there should be one scalar, at least one scalar non-zero. Now alpha x is 0, either alpha is 0 or x is 0, only then the product will be 0, one of them should be 0. So alpha is 0 or x is 0, but alpha cannot be 0, that implies x is 0. So if x is a singleton set and is linearly dependent, then it contains only zero vector. Second, if let us assume that S is a singleton set containing zero element only. Now 0, 1 into 0 is 0, therefore 0 is linearly dependent because scalar is non-zero. Is it clear to you all? So these are the few theorems that you have to do yourself. Just read out the problems and you will get the